Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. Dear students, we are here to read the poetry section now. Dear students, we have already read 4 poems, and inshallah, we are going to read the 5th poem. Dear students, you open your books to page number 67. It's I Cannot Remember My Mother. Dear students, before we start the poem, before we start reading the poem, before we start its translation, before we start its line by line translation and recitation, dear students, let us try to know about the poet. Let me give you an introduction to the poet, what the poet is, who has written this poem, what is the name of the writer, what is the name of the poet. Dear students, the name of the poet is Rabindranath Tagore. Dear students, you all might have heard about Rabindranath Tagore. Dear students, Rabindranath Tagore was also known as Banu Singha Thakur or Gurudev. Banu Singha Thakur and Gurudev, इन दोनों नामों से उसको जाना जाता था. He was a great poet, musician and an artist from Indian subcontinent. He became the first non-European to win Nobel Prize for Literature in 1913. Yes. This is all about the poet. Now, dear students, let us try to understand the meaning of the title of the poem, what the poem is all about. Dear students, I cannot remember my mother. Now, dear students, the poem is all about mother. Mother, you all know. And dear students, this mother, it's if we see in Islam, this mother, it's highly ranked. It's highly ranked in Islam. Dear students, if we see the Quran, if we read the Quran, when we read the Quran, Quran talks about mother and father, parents, both in many places. Dear students, and not only Quran, but in the sayings of the Prophet, if we see the sayings of the Prophet, dear students, we can find the mother is mentioned there also. And dear students, let me quote a few. One of the famous sayings of the Prophet about mother is, paradise lies beneath your mother's feet. माँ के पैरों तले, माँ के कदमों तले जन्नत होती है. This is one of the sayings of the prophets about mother. And another saying is, dear students, once a companion of the Prophet, he came to the messenger of Allah and said and questioned, O Prophet, O Messenger of Allah, who deserve the maximum love and companionship, who deserve the most love and companionship. एक दफा एक सहाबी आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सवाल पूछते हैं कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी चाहिए, यानी सबसे ज्यादा हुस्न सलूक किससे करना चाहिए, यानी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, he said your mother. He said after that whom? He said your mother. He said after that whom? He said your mother. He said after that whom? He said your father. यानी वो 3 दफा पूछते हैं आपकी माँ, आपकी माँ, आपकी माँ, तो चौथी बार पूछते हैं आपके बाप. यानी 3 दफा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा हुस्न सलूक की हकदार आपकी माँ है, और चौथी बार कहते हैं कि आपके बाप. So this is what the mother is all about. Now I cannot remember my mother. It's I cannot remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी माँ याद नहीं है. Now dear students, Rabindranath Tagore, he is talking about his own mother. Actually, what has happened to Rabindranath Tagore, when he was a little boy, when he was a child, when he was an infant, he has lost his mother. In infancy, he has lost his mother. Now, he cannot remember his mother. इसको इसकी माँ याद नहीं आती है. मतलब अमिश पानी मोज याद ही पेवन मेन मोज किस कमी आय मेन मोज. Now, dear students, let us start. The introduction to the poem is, the poem is about the sensitive and intense feelings of a child. ये जो poem है, ये एक बच्चे की feelings के बारे में है, उसकी feelings के बारे में, उसके एहसासात के बारे में है. लेकिन कैसे एहसासात, कैसी feelings? sensitive के मानिए हसास, sensitive के मानिए quick to respond to slight changes, sensitive के मानिए sensible, हसास, and intense के बारे
let me tell you, intense means hard, intense means shadid, it means stiff, it means severe, सख्त किस्म की feelings, hassas, sensible feelings. The poem is about the sensitive and intense feelings of a child. उसके एहसासात, उसकी feelings के बारे में यानी बच्चा अपनी माँ के बारे में कैसा फील करता है. How he feels about his mother. He remembers all the things that his mother used to do. उसको वो सारी चीजें याद आती है जो उसकी माँ किया करती थी. अमिश तिम सारी चीज पेवन याद यस अम सन्ज मोज ٲس करन. तम सातन यह चूंकि वारिया लॉकुट लेकिन कुछ रिमेम्बरेंस, थोड़ी फेड रिमेम्बरेंस है इसको. अमिश क्या याद अमिश धुंधला सा इसको याद आता है अपनी माँ के बारे में थोड़ा थोड़ा. Now let us start the poem. I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. I cannot remember my mother. Dear students, the poet is in pain, he is in agony. ये जो poet है इसको बड़ा मतलब दर्द सा महसूस हो रहा है अपनी माँ के बारे में. He is saying that I cannot remember my mother. मुझे अपनी माँ याद नहीं है, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता हूं. Only sometimes in the midst of my play. लेकिन कभी कभार in the midst of my play, जब मैं खेलता हूं, ये भी गिंदन छुस कशिर पॉइंट कुन साथ जब मैं खेलता हूं, जब मैं खेल रहा होता हूं, तो उस टाइम क्या होता है. मिडिस्ट के मानिए इन द मिडल ऑफ, मिडिस्ट के मानिए दरमियान, मिडिस्ट के मानिए बीच में. A tune seems to hover over my playthings. तो क्या होता है, ट्यून के मानी है तान, ट्यून के मानी है धुन, ट्यून के मानी है मेलेडी. A tune seems to hover over my playthings. अब जो मेरी playthings होती है, खेलने की चीजें होती है, are you getting me? अब ये जो खेलने की चीजें होती है, a tune seems to hover over my playthings. एक धुन, hover के माने है, let me translate the word hover. Hover means float, hover means तैरना, hover means remain in one place in the air. कोई चीज जब हवा में रहती है या तैरती है, फ्लोट करती है, दैट्स कॉल्ड हॉवर. तो जब मैं इन चीजों के साथ खेलता हूं, अब इस बीच में, इस खेलने के बीच में क्या होता है, ए ट्यून सीम्स टू हॉवर. एक ट्यून सी, एक धुन सी, एक मेलोडी सी इन चीजों के ऊपर आती है, तैरती है. ए ट्यून सीम्स टू हॉवर ओवर माय प्लेथिंग्स. कशिर पॉइंट को यम सातन बह गिंदन छुस आसन, अख मेलोडी, अख ट्यून, अख छु यमन चीजन पेट कन, या मनो इन चीजों से एक धुन सी निकल आती है, इन चीजों से एक धुन सी निकल आती है, एक ट्यून सा निकल आता है जिन चीजों के साथ मैं खेलता हूं. या तो मनो ये यमन चीजन गिंदन छुस, अख मेलोडी, अख ट्यून छु हवास मज जन ते फ्लोट करन, जैसे कोई धुन सी तैरती है हवा में. जब मैं इन चीजों के साथ खेलता हूं, मे अख आवाज यमन यम सातन बह यमन चीजन गिंदन छुस. The tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. Dear students, let us try to understand the meaning of these difficult words. It is hum. हम के मानी है, इट मीन्स गुनगुनाना. हम के मानी है मेक ए लो स्टडी कंटिन्यूअस साउंड लाइक दैट ऑफ अ बी. बी के जैसी तंत्र आयत है कशिर पॉइंट वन गुनगुनाना. इट्स लाइक दिस. यस, हम while rocking my cradle. Rock के मानी है cause someone to move backwards and forwards or from side to side. Rock, move करना, हिलाना. Cradle के मानी है झूला, an infant's bed or crib. आप जानते होंगे मंजुल यथिस कशिर पॉइंट 1 इंच. अच्छा, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माय क्रैडल. यानी what he's trying to say is that the poet is unable to remember his mother because he has lost his mother when he was an infant, when he was a child. But while playing, लेकिन खेलने के दौरान क्या होता है, the poet feels some sound floating above his toys. अमिस छ पन्नेव चीजों पे कितना आवाज यवन, एक धुन सी, एक मेलोडी सी. He feels the tune similar to his cradle song, the tune of some song that she used to. अब ये जो चीजों से जो आवाज आती है, ये आवाज जो होती है, ये उस धुन जैसी आवाज होती है
उस दुन की जैसी होती है जो दुन वो इसको सुनाती है जब वो इसको झूला झुलाती है बचपन में। कशिर पॉइंट गो यह तिथि आवाज आसन यस यमो चीजों पे आवाज यह तिथि आवाज आसन यम सातन यह बच्चे यम सातन रविंद्रनाथ टैगोर क्रैडलस मज यम सातन यह मंजलिस मज आसन पत हम करन। उसके बाद जब यह गुनगुनाती यम सातन अख बच्चे मंजलिस मज मोज अमिस आसन गुनगुनावन यह सह बात वन सह मेलोडी वन और यह मेलोडी अमिस बासन यह मेलोडी अमिस यह दुन अमिस यमो चीजों पे। आर यू गेटिंग मी? The poet actually, while playing, the poet feels some sound floating about his toys. Above his toys, he feels the tune similar to his cradle song. Emis chu basan yes आवाज यवन शिमो चीजों पे एमिस आवाज बासन तिथि इत पट यम सातन एमिस मोज आसन गुनगुनावन यम सातन यह क्रैडलस मज आसन यम सात यह झूलस मज आसन यम सात यह मंजलिस मज आसन अवे वनन he feels the tune similar to his cradle song. Yes. This is the very first stanza. Now, stanza number 2. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of shuli flowers floats in the air. Turn the page, students. The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. Acha, now what he's trying to say in stanza 2, he's saying that I cannot remember my mother. ये फिर से दोहरा रहा है. He is in agony, he is in pain. I cannot remember my mother. मुझे मेरी माँ याद नहीं है. मैं शन पानी मोज पेवन यादी मीन मोज किसस. I cannot remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता. But when in the early autumn morning, the smell of shuli flowers float in the air. लेकिन क्या होता है? But when in early autumn morning, जब ऑटम की सुबह होती है, जब ऑटम की सुबह होती है, क्योंकि ऑटम में ये जो शूली फ्लावर्स होते हैं ये खिलते हैं, इनकी खुशबू हवा में तैरती है. बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर. ऑटम मीन्स मौसम खजान यथ वन. द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज शूली फ्लावर? यू नो, shuli is a kind of a white flower, a flower that the people of Hindu community used to decorate their gods. जो यम तिम फ्लावर आसन यम जन यम इस्तेमाल करन पूजा करनस पे, वो देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, बुतों के ऊपर चढ़ाते हैं वही फूल. अच्छा, बट व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन ये जो फूल होते हैं, शूली फ्लावर्स होते हैं, ये ऑटम के सीजन में खिलते हैं. बट व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर. लेकिन क्या होता है, ऑटम की जब ये सुबह होती है, ये जो द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर, इनकी जो महक होती है, इनकी जो खुशबू होती है, वो हवा में तैरती है इन शूली फ्लावर्स की. अच्छा, एंड द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विसेज इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. और उसके बाद द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल. अब इसकी जो माँ थी वो क्या करती थी, वो सुबह जाती थी, मंदिर में वो जाती थी, टेम्पल में वो जाती थी, तो वो ये फूल चढ़ाती थी पूजा के तौर पे. वो वहां जाती थी, पूजा करने के लिए जाती थी, तो ये फूल चढ़ाती थी. अच्छा, तो शायर कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर इज सेइंग, ये कहता है, अच्छा, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विसेज इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. इन फूलों से, ये जो फूल होते हैं, ये जो शूली फ्लावर्स होते हैं, इन फूलों से, ये शूली फ्लावर्स जो होते हैं, ये मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है. इन फूलों से मुझे मेरी माँ याद आती है. मे पेवन सु मुशुक याद, मे पेवन ये मुशुक वुचित मे पेवन ये मुशुक महसूस करित मे पेवन पानी मोज याद. द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, वो फूल जो वो चढ़ाती थी, मंदिर में ले जाती थी वहां पूजा करने के लिए, कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. यमो अम मुश्क से मे पानी मोज पेवन याद, जन मे जैसे मेरी माँ ही होती है. सो एक्चुअली इन स्टैंजा 2 द पोएट इज सेइंग दैट the poet loves his mother even after her death. He feels her presence in the smell of holy flowers. He feels her presence in the smell of
holy flowers she used in the morning prayers, यानी वो फूल जो वो मॉर्निंग प्रेयर्स में इस्तेमाल करती थी, जो वो चढ़ाती थी उन बुतों में, यानी इन फूलों से ये फूल इसको इसकी मां की याद दिलाती है. So this is all about this stanza. Now dear students, inshallah we'll be reading the next stanza tomorrow, inshallah. Hope you all have understood these two stanzas. So goodbye. Allah Hafiz.